नमस्कार। आर एस मैथिली चैनल में अपने स्वागत है। आइ हम सब वीडियो के अंतर्गत देखब मैथिली व्याकरण। व्याकरण में हम सब देखब सब वर्ण परिचय, कारण वर्ण परिचय एक महत्वपूर्ण चैप्टर है व्याकरण में, जैसे नेट परीक्षा में 2 या 3टा प्रश्न पूछल जाइत अछि जे 4 या 6 नंबर के रहैत अछि। आ ई फिक्से अछि जे एहिमे से 2टा के प्रश्न कम से कम अवश्य रहैत अछि। कोनो वर्णक परिचय रहैत अछि वा वर्णक उच्चारण स्थान पूछल जाइत अछि। तो वीडियो को देखब महत्वपूर्ण अछि। यदि अपने आर एस मैथिली चैनल के सब्सक्राइब नहीं केने छी तो सब्सक्राइब कर ली, जैसे कोनो वीडियो छूटे नहीं। आ वीडियो नीक लगे तो लाइक शेयर सेहो करी। तो हम सब देखब आइ व्याकरण। व्याकरण के अर्थ होइत अछि शब्दशास्त्र। व्याकरण एकटा शब्दशास्त्र अछि जे प्रत्येक शब्दक पृथक पृथक अर्थात अलग अलग खंडक व्युत्पत्ति परक अर्थ अभिव्यक्त करैत अछि। व्याकरण जे अछि प्रत्येक शब्द के जे अछि, इस शब्द के जे अलग अलग खंड होइत अछि, एक उत्पत्ति या व्युत्पत्ति परक जे अर्थ होइत अछि ताके अभिव्यक्त करैत अछि। व्याकरणक मुख्यतः मुख्य या प्रकरण या प्रसंग 3टा अछि। मैथिली व्याकरणक मुख्यतः 3टा प्रकरण अछि। एहिमे देखब हम सब पहिल वर्ण प्रकरण, शब्द प्रकरण आ वाक्य प्रकरण। एहिमे हम सब आइ चर्चा करब वर्ण प्रकरण के संबंध में या वर्ण परिचय के संबंध में, जाहिमे कोनो शब्द के निर्माण जे अछि बिना वर्ण के नहीं भऽ सकैत अछि। वर्ण के जोड़ि जोड़ि के वर्णमाला के सार्थक वर्णमाला के जोड़ि के जे अछि कोनो शब्द के निर्माण कयल जाइत अछि। एहि शब्द के फिर पुनः जोड़ि जोड़ि के वाक्य निर्माण कयल जाइत अछि। तो हम सब पहले देखब आइ वर्ण प्रकरण। वर्ण के परिचय। कोनो भाषा में एकर वर्णक महत्वपूर्ण स्थान छै। कोनो भाषा किया नहीं होय, ओहि भाषा के जे वर्ण रहैत अछि ओहि भाषा में ओकर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहै छै। जेना कोनो भाषा रूपी जे विशाल भवन रहत, एके निर्माण करे के लेल वर्ण जे अछि नींव के काम करैत अछि। यह नींव पर जे अछि कोनो भाषा रूपी विशाल भवन टिकल रहैत अछि। जेना एकटा भवन के निर्माण करे के लेल एक एकटा ईंट के आवश्यकता पड़ैत अछि, तहिना भाषा रूपी भवन के निर्माण के लेल एक एकटा वर्णक आवश्यकता होइत अछि। ओ सार्थक क्रम में वर्ण के व्यवस्थित कऽ के पुनः शब्द के निर्माण या व्युत्पत्ति कयल जाइत अछि। मैथिली भाषाक वर्ण सेहो सबसे छोट मुदा सार्थक इकाई होइत अछि। वर्ण की होइत अछि? कोनो भाषा, मैथिली हुए वा आनो कोनो भाषा, एक की होइत अछि सबसे छोट लेकिन की रहैत अछि सार्थक इकाई होइत अछि वर्ण। वर्ण एकटा विशिष्ट ध्वनि खंड अछि। वर्ण की अछि? एकटा विशिष्ट ध्वनि खंड जकरा और सार्थक खंड करब संभव नहीं। वर्ण जे होइत अछि एकटा विशिष्ट ध्वनि खंड के कहल जाइत अछि, जेके और ओहिसे छोट करब, खंड करब सार्थक या संभव नहीं अछि। जेना वर्ण भऽ जाइत अछि अ, ई, ए, ऐ, माने वर्णमाला जे हम सब पढ़ने हैं, एहिमे कोनो वर्ण जे अछि वर्णक उदाहरण भऽ गेल अ, ई, ए, क, ख, च, भ, ह, र। कोनो वर्ण जे अछि ई वर्णक उदाहरण भऽ गेल। अखंड मूल ध्वनि के वर्ण कहल जाइत अछि। की होइत अछि? वर्ण की होइत अछि? अखंड मूल ध्वनि होइत अछि। अखंड होइत अछि, एहि वर्ण के और छोट करब संभव नहीं होइत अछि, तेँ ओकरे अखंड सेहो कहल जाइत अछि। अखंड मूल ध्वनि के वर्ण कहल जाइत अछि। प्रत्येक भाषा के अपन लिपि होइत छैक आ एहि लिपि के वर्ण संकेत कहल जाइत अछि। मैथिलियो के जेना अपन लिपि अछि, आ लिपि में जे लिखै छी हम सब कोनो भाषा के लिपि होइत अछि, तो ओहिके लिपि के
वर्ण के संकेत रहते, सिम्बॉल, वर्ण के सिम्बॉल के रूप में रहते। एक पुनः सार्थक शब्द निर्माण के लेल वर्ण के सार्थक रूप में व्यवस्थित कयल जाइत अछि। तऽ वर्ण, कोनो लिपि के लेल वर्ण जे अछि ओहिके वर्ण संकेत भऽ जाइत अछि लिपि कोनो भाषा के लेल। मैथिली के सेहो एखन वर्तमान में 2 लिपि में लिखल जाइत अछि, मिथिलाक्षर आ देवनागरी। मिथिलाक्षर अलग, मैथिली के अपन विशिष्ट लिपि अछि, आ हिंदी वर्णमाला के समान देवनागरी लिपि में सेहो मैथिली के लिखल जाइत अछि। तऽ मैथिली वर्तमान में 2 लिपि में लिखल जाइत अछि। आदिकाल में मैथिली के कैथी लिपि में लिखल जाइत छल, ताहिके कैथी लिपि रहै छल, लेकिन अखन वर्तमान में मिथिलाक्षर आ देवनागरी 2टा लिपि में मैथिली के निर्माण कयल जाइत, लिखल जाइत अछि, रचना कयल जाइत अछि। आ वर्ण के केना बाँटल जाइत अछि विभिन्न रूप में, जेना हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, व्यंजन वर्ण, तऽ ओहिके उच्चारण के दृष्टि से बाँटल जाइत अछि। वर्णमाला के जे अछि उच्चारण के दृष्टि से विभिन्न रूप में बाँटल जाइत अछि। जेना पहिल भेल स्वर वर्ण। स्वर्ण वर्ण होइत अछि एकटा विशिष्ट ध्वनि। स्वर्ण वर्ण भऽ गेल एकटा विशिष्ट ध्वनि जे स्वतः उच्चरित होइत अछि। एहि ध्वनि के, स्वर्ण वर्ण के उच्चारण के लेल कोनो आन वर्णक सहायता नहि लेल जाइत अछि, तऽ ओ भऽ गेल स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर्ण वर्ण के सेहो उच्चारण समय के दृष्टि से 3 भाग में बाँटल गेल अछि, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर आ प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर आ तेसर भऽ गेल प्लुत स्वर। ओहिमे 3 भाग में एहि लिए बाँटल गेल अछि जे उच्चारण के इहो में समय के दृष्टि से लेल गेल अछि। जेना हर्ष स्वर, हर्ष स्वर हमसब इससे पहिले छंद में सेहो देखने छलहुँ। हर्ष स्वर के की होइत अछि, दीर्घ स्वर के की होइत अछि। हर्ष स्वर के लेल एकटा मात्रा, लघु, आ दीर्घ स्वर के लेल 2टा मात्रा के प्रयोग कयल जाइत अछि, गुरु, आ हर्ष स्वर के लेल लघु। तऽ तेना इहो में अछि, हर्ष स्वर भऽ गेल अ, हर्षी, हर्षु आ री। आ दीर्घ स्वर भऽ जाइत अछि, जेके हर्ष स्वर के अपेक्षा उच्चारण में अधिक समय लगैत अछि, तऽ भऽ जाइत अछि दीर्घ स्वर। जेना आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, ई सब भऽ गेल दीर्घ स्वर। आ छंद में इहो के हमसब देखने छलहुँ, दुनू के हर्ष स्वर आ दीर्घ स्वर के पूरा छंद इएह दुनू पर निर्भर अछि, लघु आ गुरु मात्रा के रूप में। आ तेसर भऽ गेल, तेसर स्वर वर्ण भऽ गेल जे प्लुत स्वर वर्ण। प्लुत स्वर वर्ण अछि जेके उच्चारण में दीर्घो स्वर से अधिक समय लगैत अछि। जेना ओम, ओम के उच्चारण में हमसब कनि लंबा समय लेलहुँ, उ बीच में देल अछि, 3 के रूप में देल गेल अछि, तऽ भऽ गेल प्लुत स्वर। जेना हे कृष्ण, इहो के उच्चारण माने कनि उच्चारण में के अधिक समय दै छी, तऽ भऽ जाइत अछि प्लुत स्वर। नेट परीक्षा में हर्ष स्वर आ दीर्घ स्वर से प्रश्न पूछल जाइत अछि, तऽ एके याद राखब आवश्यक अछि। आगाँ हमसब देखब, हर्ष स्वर देख लेलहुँ, स्वर्ण वर्ण के देखलहुँ। अगिला अछि व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण भऽ जाइत अछि जे एहिके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण के सहायता लेल जाइत अछि। तऽ व्यंजन वर्ण के उच्चारण होइत अछि जेना स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, आ उष्ण व्यंजन वर्ण, आ संयुक्त व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के 4 भाग में बाँटल गेल अछि, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, उष्ण व्यंजन वर्ण आ संयुक्त व्यंजन वर्ण। एक एकटा देखब हमसब, बहुत महत्वपूर्ण अछि। अंतस्थ व्यंजन वर्ण आ उष्ण व्यंजन वर्ण से नेट में पूछल जाइत अछि। तऽ पहिल अछि स्पर्श व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के अर्थ भेल जे कोनो आन स्वर्ण वर्ण के सहायता से जेके उच्चारण कयल जायत, तऽ भऽ जाइत अछि व्यंजन वर्ण। आ इहो में स्पर्श व्यंजन वर्ण अछि, ताहिके हमसब देखब जे जय वर्गीय, जय कोनो जे अछि वर्गीय उच्चारण स्थान के स्पर्श से जे उच्चरित होइत अछि,
ओहि वर्णके स्पर्श व्यंजन वर्ण कहल जाइत अछि। ई स्पर्श व्यंजन वर्ण 5 प्रकारक अछि आ कुल प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण के 5-5टा भेद अछि, 5-5टा प्रकार अछि, तऽ 5-25टा भऽ जाइत अछि स्पर्श व्यंजन वर्ण। जेना पहिल अछि क वर्ग। आइके सबके व्यंजन वर्णके एहि वर्गके जे अछि प्रथम वर्णसँ नामकरण कयल जाय। जेना क वर्गके लेल क ख ग घ ङ। च वर्गके लेल भऽ गेल च छ ज झ न। ट वर्ग ट ठ ड ढ न। त वर्ग प वर्ग प फ ब भ म। तऽ ओसभ भऽ जाइत अछि के नामकरण कयल जाइत अछि ओहि वर्णमाला प्रथम वर्णके नामसँ ओहि वर्गके नाम कयल जाय। जेना क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग। ईसभ भऽ गेल स्पर्श व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णमे एकटा अगिला अछि अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण जाहि वर्णके उच्चारणमे स्वर आ व्यंजन वर्णके बीचमे होइत अछि। ई अंतस्थ व्यंजन वर्ण की होइत अछि? स्वर वर्ण आ व्यंजन वर्णके बीचके होइत अछि। ई नहि पूर्ण रूपसँ स्वरे वर्ण अछि आ नहि व्यंजने वर्ण अछि। तैँ अंतस्थ व्यंजन वर्णके अर्ध स्वर सेहो कहल जाइत अछि। अर्ध स्वर। तऽ अंतस्थ व्यंजन वर्णके संख्या 4टा अछि। य र ल व। नेट परीक्षामे पूछल जाइत अछि जे य की जे अछि य की अछि? तऽ अंतस्थ व्यंजन वर्ण या उष्म व्यंजन वर्ण या स्पर्श व्यंजन वर्ण या संयुक्त व्यंजन वर्ण। तऽ आंसरमे हमसभ मारब अंतस्थ व्यंजन वर्ण। चाहे ऑप्शनमे दऽ देत, प्रश्न पूछि देत जे अंतस्थ व्यंजन वर्ण कोन अछि? तऽ एहिमेसँ ऑप्शन देत र दऽ देत, तालब सँ मूर्धन सँ दंश ह दऽ देत। तऽ आब एहिमेसँ बुझल रहत जे अंतस्थ व्यंजन वर्ण य र ल व होइत अछि। तऽ सहीसँ टिक लगा सकैत छी, नहि तऽ गलत भऽ जायत। तऽ नेटमे पूछल जाइत अछि जे अंतस्थ व्यंजन वर्णके बारेमे जे अंतस्थ व्यंजन वर्ण की अइ? अर्ध स्वर अछि। नहि पूर्ण रूपसँ व्यंजने अछि, नहि पूर्ण रूपसँ स्वरे अछि। अगिला भऽ गेल व्यंजन वर्ण उष्म व्यंजन वर्ण। उष्म व्यंजन वर्ण जाहि वर्णक उच्चारण जिह्वा एवं तालुसँ अवरुद्ध भऽ जाहि वर्णक उच्चारण जिह्वा एवं तालुसँ अवरुद्ध भऽ पुनः उष्म या गर्म प्राणवायु संग उच्चरित होइत अछि तऽ ओ उष्म व्यंजन वर्ण कहबैत अछि। पुनः जे वर्णके उच्चारण जे अछि प्राणवायु अर्थात मुँहके कोनो शब्दके उच्चारणमे जे घर्षण होइत अछि तऽ ओ भऽ जाइत अछि उष्म व्यंजन वर्ण। उष्म माने भेल गर्म। कोनो शब्दके उच्चारणमे हवाके घर्षण होइत अछि मुँहमे अधिक तऽ ओ भऽ जाइत अछि उष्म व्यंजन वर्ण। जेना तालव्यसँ ओहिके उच्चारणमे घर्षण होइत अछि हवाके मुँहमे ज्यादा। मूर्धन्यसँ, दन्तसँ, ह ईसभ भऽ जाइत अछि उष्म व्यंजन वर्ण। उष्म व्यंजन वर्णके संख्या सेहो 4टा अछि आ अंतस्थ व्यंजन वर्णके संख्या सेहो 4टा अछि। अगिला भऽ गेल व्यंजन वर्णमे संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण होइत अछि जे 2टा वर्णके जाहिमे एकसँ अधिक व्यंजन वर्णके जे जखन परस्पर मिला कऽ जे नव वर्णके निर्माण कयल जाइत अछि तऽ भऽ जाइत अछि संयुक्त व्यंजन वर्ण। एकसँ अधिक जे वर्ण रहत एहिके परस्पर मिला कऽ जे कोनो नया वर्णके निर्माण कयल जायत तऽ भऽ जाइत अछि उष्म व्यंजन वर्ण। जेना एहिमे देखियौ अक्ष। अक्षके लेल आधा क आ मूर्धन्य स एहि दुनूके मिला कऽ अक्ष बनैत अछि। आधा क आ मूर्धन्य स के मिला कऽ तरह। तरह जे अछि आधा त आ र ओहि दुनूके मेलसँ तरह बनै छै तऽ ओ संयुक्त वर्ण भऽ गेल। स्र। स्रमे जे अछि तालव्य स आ छोटी र ई दुनूके जोड़ केला योग केलाके बाद स्रके निर्माण होइत अछि तऽ ओ भऽ जाइत संयुक्त वर्ण। ज्ञ। ज्ञमे आधा ज आ ञ ज्ञ। न अछि च छ ज झ के न तऽ भऽ गेल ज्ञ। ज्ञ जे अछि सेहो 2टा वर्णके मेलसँ
इहो व्यञ्जन वर्ण होइत अछि आ दूटा व्यञ्जन वर्णके संयुक्त कयलासँ जे वर्णके निर्माण होइत अछि ओ संयुक्त व्यञ्जन वर्ण होइत अछि। तऽ हमसभ देखलहुँ अंतस्थ उष्ण व्यञ्जन वर्ण ककरा कहबै, संयुक्त व्यञ्जन वर्ण ककरा कहबै, स्पर्श व्यञ्जन वर्ण ककरा कहबै। आब देखब सब वर्णक उच्चारण स्थान। वर्णक उच्चारण स्थान एहिमे देखब जे वर्णक उच्चारण स्थान की अछि आ वर्ण कोन अछि, कोन वर्णके मुँहक कोन जगहसँ उच्चारण होइत अछि, केना होइत अछि ताहिके सम्बन्धमे। तऽ भऽ गेल कंठ। कंठसँ उच्चरित होयवला वर्णसभ भऽ गेल अ, आ, क, ख, ग, घ, ञ आ ह। एहिमे आ विसर्गके सेहो कंठसँ उच्चारण होइत छै, जेना कहै छियै तऽ विसर्गके उच्चारण सेहो कंठसँ होइत अछि। ताहिमे कंठसँ उच्चरित वला भऽ गेल आ कवर्ग, क वर्ग। आ कवर्ग भऽ गेल कंठसँ उच्चरित होयवला आ यर लबके ह भऽ गेल कंठसँ उच्चरित होयवला। तऽ उच्चारण स्थानके सम्बन्धमे सेहो नेटमे पूछल जाइत अछि जे ह के उच्चारण स्थान की अछि तऽ कंठ। तहिना भऽ गेल दोसर तालु। तालु भऽ गेल, तालुसँ उच्चरित होयवला भऽ गेल हर्षइ, दीर्घइ आ च, छ, ज, झ, ञ। च, छ, ज, झ माने चवर्ग। चवर्ग भऽ गेल तालुसँ उच्चरित होयवला आ संगमे य आ तालब स। तालब स देखियौ नामेसँ अछि तालब स। तालब स के मतलब भेलै तालुसँ उच्चरित होयवला स, तालब स कहबैत अछि। जहिना मूर्धासँ उच्चरित होयवला अछि, मूर्धासँ उच्चरित होयवला वर्ण सब भऽ गेल री आ टवर्ग। टवर्ग भऽ गेल मूर्धासँ उच्चरित होयवला ट, ठ, ड, ढ, न आ संगमे यर लबके य, र अछि आ मूर्धन स अछि। र आ मूर्धन स। तालब स के उच्चारण तालुसँ होइत अछि, मूर्धन स के उच्चारण मूर्धासँ होइत अछि, से याद राखब। आ संगमे र के सेहो उच्चारण अछि मूर्धासँ होइत अछि। तऽ मूर्धासँ उच्चारण होयवला वर्णसभ भऽ गेल री आ टवर्ग आ संगमे र आ मूर्धन स के मूर्धासँ उच्चारण होइत अछि। अगिला भऽ गेल उच्चारण स्थान दंत, माने दंतसँ उच्चारण होयवला शब्द भऽ गेल तवर्ग, त, थ, द, ध, न आ ल आ ई भऽ गेल दंतसँ। तवर्ग, त वर्ग आ यर लबमे ल आ दंतसँ। एहिके उच्चारण भऽ जायत दाँतसँ। दंत के उच्चारण स्थान भऽ जाइत अछि दंत। तऽ तीन टा स अछि, तालब स के उच्चारण तालुसँ, मूर्धन स के उच्चारण मूर्धासँ आ दंत स के उच्चारण दाँतसँ। आ संगमे तवर्गके उच्चारण सेहो दंतसँ होइत अछि। अगिला भऽ गेल ओष्ठ। उच्चारण स्थान भऽ गेल ओष्ठ आ वर्ण सब भऽ गेल जे उ, हर्ष उ, दीर्घ उ, प, फ, ब, भ, म। ई सबके उच्चारण भऽ जाइत अछि ओष्ठसँ। तऽ ओष्ठसँ उच्चारण होयवला भऽ गेल हर्ष उ, दीर्घ उ आ संगमे प वर्ग। पवर्गके उच्चारण भऽ जाइत अछि ओष्ठसँ। एहि सबके एतेकके देखलहुँ। आब देखब हमसब संयुक्त उच्चारण स्थानसँ, जेना ऐ के उच्चारण भऽ जाइत अछि कंठ आ तालुसँ। कंठ आ प्लस तालुसँ उच्चारण भऽ जायत ए आ ऐ के। कंठ प्लस ओष्ठसँ उच्चारण भऽ जायत ओ आ औ। उच्चारण करबै तऽ यहाँ भऽ जायत ओ औ। मुँहेके उच्चारणसँ पता चलि जाइत अछि जे ओ औ के उच्चारण कंठ आओर ओष्ठसँ होइत अछि। ताहिके बाद भऽ गेल वर्ण भऽ गेल व के उच्चारण भऽ जाइत अछि दाँत आ प्लस ओठ। दाँत आ ओठके सम्मिलित रूपसँ ब के उच्चारण भऽ जाइत छै। यर लबैमे व देखै छियै, ई व के उच्चारण भऽ जाइत अछि दाँत प्लस ओष्ठसँ। लेकिन प, फ, ब, भ के होइत छै ब के उच्चारण भऽ जाइत अछि ओष्ठसँ। सीधे ओष्ठ रहतै तऽ भऽ जायत प, फ, ब, भ के ब। आ व रहत तऽ दाँत प्लस ओष्ठसँ उच्चारण भऽ जाइत अछि व के। फेर नासिका, माने
नासिका भऽ गेल जकरा हमसभ कहै छी जे नाकसँ जे उच्चरित होइत अछि, ताहि वर्ण सभके। एहि वर्ण सभमे भऽ गेल जे पंचमा वर्ण जे भऽ जाइत अछि स्पर्श वर्णके, ताहि सभके उच्चारण भऽ जाइत अछि नासिकासँ। जेना ज्ञ, ञ, न, न, म, माने जतेक स्पर्श वर्ण अछि, स्पर्श वर्ण ताहिके पाँचमा वर्ण जे भऽ जाइत अछि से नासिकासँ उच्चारण होइत छै, अनुनासिक वर्ण भऽ गेल। तऽ हमसभ देखलहुँ आइ प्रत्येक वर्ण, एहि वर्णके उच्चारण स्थान, जाहिमे कंठ सत की उच्चारण होइ छै, तालुसँ की उच्चारण होइ छै, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आ ओष्ठ प्लस तालुके सम्मिलित रूपसँ, ओष्ठ कंठ प्लस ओष्ठके सम्मिलित रूपसँ, दंत प्लस ओष्ठके सम्मिलित रूपसँ कोन कोन वर्णके उच्चारण होइत अछि, नासिकासँ कोन वर्णके उच्चारण होइत अछि, अंतस्थ वर्ण, उष्ण वर्ण आ संयुक्त व्यंजन वर्ण ककरा कहबै, ताहि सभके अंतस्थ व्यंजन वर्ण, उष्ण व्यंजन वर्ण आ उच्चारण स्थान, ईसभ नेटके लेल बहुत महत्वपूर्ण अछि। एहिमे से 2टा या 3टा प्रश्न अवश्य पूछल जाइत अछि, तऽ एहिके याद रखब बहुत महत्वपूर्ण अछि। वीडियो देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोके नीक लगैत हुए तऽ लाइक शेयर करी, आ सब्सक्राइब नहि कयने छी तऽ सब्सक्राइब जरूर करी। धन्यवाद।